The big story we're tracking: rescue and relief operations in flood-ravaged Kashmir as the Umar Abdullah government comes under fire for its lack of preparedness. The question on everyone's mind is, was it possible for the administration to contain the extent of the disaster? A Mail Today exclusive has now revealed that a flood-hit Srinagar is perhaps paying the price of ignorance that local authorities have shown towards preserving its lakes and wetlands. According to Mail Today, despite several studies and reports by scientists in the state itself, the state government kept sitting on alerts instead of strengthening its preparedness for handling impending disasters. 4 years ago, the Flood Control Department of Jammu had formulated a dire but accurate warning on the state's summer capital being flooded by an intense spell of rain. The report and its copied weighed roughly a ton, and the heavy-duty consignment was sent to the Union Ministry of Water Resources in a truck. Nothing of note happened after the delivery, certainly not enough to make any difference to what was inevitably around the corner. A study available with the Union Ministry of Environment and Forest carried out by GIS Laboratory Jammu and Kashmir State Remote Sensing Centre says that more than 50% of the water bodies in Srinagar have been lost during the last half-century. In fact, scientists used satellite imagery to study shrinking lakes between 1911 and 2004. According to the Centre for Science and Environment, the government was absolving itself of responsibility by simply stating that the Indian Met Department that such events were caused due to interaction of monsoon currents with western disturbances and not going deeper into the reasons behind the calamity. जो जगह है जो पूरी सीमा थी कम हो गई है, और जो पूरा डल के नीचे का जो इलाका था जहां से पानी निकलता था, निकास का पानी जो निकलने की जगह थी, उसके ऊपर आबादी बन गई है। तो अगर यहाँ बाढ़ नहीं आएगी तो क्या आएगी? जब पानी निकलने का जो साधन था वो पूरी तरह से टूट गया है, उसको बिखर, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। तो जब जैसे सीडी ने कहा, जब ज्यादा वर्षा होगी बाढ़ आएगी, कौन क्लियरेंस देता है? राज्य सरकार ही देती है। All right, for more on this story, we have with us our Deputy Editor Atir Khan in our studios. Also joining us this morning is Mr. Shamlal Sharma, Irrigation and Flood Minister of Jammu and Kashmir. I'm going to come to you first, Mr. Sharma. Exclusive details available with Mail Today showed that it's not just a natural calamity which has led to such death and destruction. Also, it's the irresponsible behavior of the state government towards an alert that was sounded that's resulted in this tragedy. देखिए, जहां मुझे लगता है कि ये टाइम ब्लेम गेम का नहीं है, ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी त्रासदी है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अब मेरी उम्र भी जो है 50 साल से ऊपर है, और जो लोग 100-100 साल के भी हैं, क्योंकि मैं पिछले 5 दिन से कश्मीर में ही था और इसको बहुत क्लोजली हम इन चीज़ों को देख रहे थे, साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक, और खसूसन तौर पर जो हमारी सेंट्रल कश्मीर है जिसको श्रीनगर शहर कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये डिज़ास्टर जो है ये बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं कोई कोताही हो सकती है इंक्रोचमेंट की या वाटर बॉडी की, लेकिन ये बहुत बड़ा एक कुदरत की तरफ से एक कहर है। Yes, और Mr. उसके Shamlal लिए Sharma, जो the point that I'm trying to make is that it's not just the extent of the natural calamity, but the fact that the state government ignored repeated warnings issued by the noted departments in your own state that led to the extent of the disaster completely falling out of control. नहीं, ऐसी बात नहीं है। 4 तारीख को जब यहाँ पे बारिश शुरू हुई थी, 4 सितंबर, और मुझे याद है कि मैंने रात के 1 बजे कश्मीर के डीसी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डिपकॉम श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर और मेरा चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जो हमारा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का हमारा कंट्रोल रूम 0 ब्रिज पे था, और वहाँ मैंने सुबह 4 बजे तक ये जो है ये मीटिंग कन्वीन की, और उसके बाद मस्जिद से हमने मस्जिदों, जितनी भी हमारी मस्जिद हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन का साधन था, उनको हमने कन्वे किया, फिर हमने पुलिस कंट्रोल रूम को कन्वे किया,
और मुझे नहीं लगता है कि लोग इसके लिए तैयार थे और उन्होंने कभी ये चीज देखी नहीं थी। मैं लोगों को भी अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, बट प्रशासन भी इसके लिए तैयार नहीं था। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 4 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर के फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की थी जिसने बताया था कि इंटेंस रेनफॉल की वजह से बहुत जबरदस्त फ्लड आ सकता है वैली में, और इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि फ्लड के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने 2200 करोड़ रुपए का जो है वो एक प्रोजेक्ट, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो था वो सबमिट किया था। उसके हमें कोई थोड़ी सा अमाउंट जो है 97 करोड़ ईयर मार्क भी हुआ और उसमें हमने कुछ एक्सपेंडिचर भी किया और हमने वर्क्स भी जो है एग्जीक्यूट किए, जिसमें हमने 2 ड्रेजिंग मशीन भी लगाई। दैट इज़ वाई इस बार जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारी वो बड़ी है। ये बात नहीं है कि हमने उस पर कुछ काम नहीं किया। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो पुराने गेज थे, अगर संगम के गेज की हम देखें तो उसकी अपर लिमिट जो थी वो 33 फीट थी, और जो हमारा जीरो ब्रिज का श्रीनगर का जो हमारा गेज है वो हमारा डेंजर जो अपर लिमिट डेंजर की है वो 90 फीट है। अगर आप देखेंगे कि जो जेलम ने पानी कैरी किया है, चाहे वो जेलम जो मेन रिवर है, चाहे हमारा वहाँ पे फ्लड चैनल है मैजूर नगर वाला, तो ऑलमोस्ट उसने 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है कैरी किया है। लेकिन मुझे लगता है जो हमने अभी तक, हमारी एस्टिमेशन है कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो फ्लड हुआ है। Yes, but Mr. Sharma, fact is that crucial warnings were ignored by our administration. हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो embankments बनाए गए थे उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी, which is why a river like Jhelum breached embankments, flooding several colonies. आप ही सोचिए 2-2, 3-3 माले की बिल्डिंग जो है पानी के नीचे आ गई क्योंकि embankments क्वालिटी के नहीं थे, जरा से पानी के दबाव से वो टूट गए। देखिए मैडम, मैं कहता हूं कि ये कुछ इश्यू हैं जिन पे हम लेटर ऑन इन चीजों की डिस्कशन कर सकते हैं। इस समय हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज डिस्कशन तो अभी होगा। मिनिस्टर फॉर इरिगेशन एंड फ्लड रिलीफ तो आर्मी वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जितना कर सकती है कर रही है। आप ये बताइए, इरिगेशन एंड फ्लड मिनिस्टर होने के नाते आपने क्या किया है पिछले 5 सालों में? मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, मैं तो सिस्टम को कैरी करता हूं। मैं ये रिस्पांसिबिलिटी भी ओन करता हूं कि हमने जो कुछ किया है वो ऑन ग्राउंड पे, और जब इस किस्म का डिजास्टर आता है मैडम, यहां भी सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, और अगर आप कहेंगे कि उत्तराखंड की त्रासदी हुई, तो ये जो चीजें हैं कुछ सुपरनेचुरल पावर की भी अथॉरिटी है उन लोगों के लिए। लेकिन हम जो एक माध्यम है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ओन कर लेता हूं, लेकिन कहीं भी हमारे पार्ट पे इस किस्म की मुझे नहीं लगता है कि हमसे कोई चूक हुई है। और पर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आप जो है ज्यादा कुछ कर सकते थे पर आपके प्रशासन ने किया नहीं। वी ऑल्सो हैव ऑन द फोन लाइन CSE's Sunita Narayanan, who's with us from the national capital. Ms. Narayanan, we have the irrigation and flood control minister of Jammu and Kashmir, Mr. Shyamlal Sharma, on a live link with us from Srinagar, and he is saying that the administration did whatever was possible under its control, and that the nature of the calamity was such the state government couldn't have done anything else. I will agree with the minister that the nature of calamity today is horrendous, and therefore the state government is struggling. But I think the minister, as he is the flood and irrigation minister of the state, he must recognize also that it is his department that plays a very critical role in making sure that such floods do not happen in the future. Because we know today that there will be extreme rainfall events, and we know that flood control becomes critical. And in Jammu and Kashmir, 2 major problems have happened. One, they do not even have a flood monitoring center in Jammu Kashmir. When we asked the Central Water Commission why the center was not set up, they have in writing said that the state government did not ask them to set up such a monitoring center. So clearly the state government did not take floods seriously till now. 2, as the Minister for Irrigation, he has to understand that his role of making sure that flood channels are protected, that you do not encroach upon them, that the lakes and the ponds of Jammu Kashmir are not destroyed, as all satellite imagery is showing today. It is showing very clearly that habitations have come in low-lying area where they should not have come. It is showing very clearly that flood control systems of the past have been destroyed. So whereas what Mr. Shyamlal is saying is right, in today's context,
I would still urge him to please think of his role as a critical role for safeguarding flood management and for doing flood management in the context of Jammu and Kashmir. Ms. Narayan, please stay on with us. शांता जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मिस नारायणन ये कह रही हैं कि आप एक फ्लड मिनिस्टर हैं और इसके नाते आप बहुत कुछ कर सकते थे, इंस्पायर ऑफ द फैक्ट दैट आप पावर में थे 5 साल, आपने एक फ्लड मॉनिटरिंग सेंटर तक इंस्टॉल नहीं किया। देखिए मैडम, मैंने ये कहा है कि ये टाइम मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लेम गेम का नहीं है। हमने कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो हमारा पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो सबमिट किया है। 2200 करोड़ का जो है वो जेलम का प्रोजेक्ट है। सबमिट कर दिया, बट एक फ्लड मॉनिटरिंग सेंटर तो आप बना सकते थे। जो सेंट्रल मिनिस्ट्री सेज कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आप भाग तो नहीं सकते। इतने लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, इतने लोग मरे हैं, 200 के करीब मरे हैं, अभी भी स्टेट की हालत आप देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइन, आप कह रहे हैं हम ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, बट आप ये मानिए कि एज अ फ्लड मिनिस्टर आपको इतना तो कुछ करना चाहिए था कि आप कोई फोरकास्ट की प्रॉपर फैसिलिटीज इंस्टॉल करें अपने स्टेट में। हमारे जितने भी ये मेजर रिवर्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल सेंटर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, और इस किस्म की जब त्रासदी आती है वो एडवांस में वार्निंग देकर तो नहीं आती है। हम तो उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। मैंने कहा है कि 4 तारीख को मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, 5 तारीख को मैं कंट्रोल रूम में था, 7 तारीख को हम जो हमारा पुलिस का कंट्रोल रूम है, माई सेल्फ एंड माई चीफ मिनिस्टर, हम वहां पे थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको देखेंगे इसकी जो ब्लास्टी है, जहां इसकी जो बेग था वो कितना बड़ा है, और पूरी रियासत जो है इसमें इसकी जद में है। अगर आप जम्मू का रीजन देखेंगे, चनाब दरिया का देखेंगे, तवी का देखेंगे, उज का देखेंगे एंड अदर ट्रिब्यूटरी एंड दीज नालाज, तो इन्होंने हैबक मचाई है। ऑलराइट मिस्टर तो ये बात ठीक है कि हमें आगे के लिए जो है वो प्रिवेंटिव मेजर और क्या हमने प्रिकॉशन लेने हैं, इन चीजों से आदमी को हम सीखते भी हैं। Absolutely, I hope some lessons will be learned. We've already seen what happened in Ladakh about 4 to 5 years back. Uttarakhand witnessed a heavy flood situation about a year ago, and now it's Jammu and Kashmir. Thanks so much, Mr. Sharma, for taking time from your busy schedule and joining us for this debate. We still have with us Center for Science and Environment, Sunita Narayanan. Sunita Narayanan, your center has issued a report saying that the government cannot absolve itself of all responsibility by simply stating that the Met Department by stating that Met Department reports that the floods were caused because of interaction between monsoon currents and western disturbances. The state government could actually have done a lot more. No, we are saying it's very clear. At this moment, particularly, I would like to not drawn into this whole issue of blaming the state government. We know that this is it's a horrendous tragedy that is playing out in Jammu and Kashmir. So many people are still trapped, and governments are struggling to even rescue them right now. So I think at this stage, as an Indian, we need to be very clear that we should not in any way either criticize or demoralize the state or the central government. And I would like that on record. But I think it's important also for us to recognize that every time such a tragedy hits, we think about it and say, we will learn for the future. But we do not learn for the future. And this is really the biggest tragedy that India has. I mean, when Uttarakhand happened last year, and I can assure you that your channel itself, I was on with a number of senior political leaders and ministers of Uttarakhand, and they said exactly this on your channel, saying, don't blame us today, don't do a blame game. We need to rescue people. The tragedy is enormous. We were unprepared for this, but we assure you we will think about this for the future. This is exactly what the Irrigation Flood Control Minister of Jammu Kashmir has just told your channel. But the problem, I would even say that is fair, but the problem is he will not learn. He will forget by the time the next tragedy happens. And my center, Center for Science and Environment, has essentially said in a report yesterday that we have to recognize that what has happened in Jammu and Kashmir is not in a 1 in 100 flood. What has happened in Jammu and Kashmir is part of a trend. It happened in Leh, it happened in Uttarakhand, this happened in Jammu and Kashmir now. We are seeing extreme weather events, extreme rainfall, and the Himalayas are most vulnerable.
So it is time we got our act together for flood forecasting, we got our act together for relief and rehabilitation, and we did not mismanage our drainage systems. Absolutely, Ms. Sunita Narayan. Thanks so much for speaking to Headlines today. That was Sunita Narayan, Director of the Centre for Science and Environment, saying that had the state government and the central government been better prepared, it could have been possible to contain this disaster which has been unfolding in Jammu and Kashmir, affecting lakhs of people, rendering them homeless. We also have in our studios our Deputy Editor Atir Khan. Atir, this is also, there are political connotations as well. Elections in Jammu and Kashmir are around the corner, and now you can see a visible anger on the ground. People actually blaming the state government, saying that Umar Abdullah had he taken alerts and acted on time, probably so many people wouldn't have been affected and so many people wouldn't have had to suffer. Well, rightly so. You know, there's always a knee-jerk reaction. Whenever there is a tragedy or a disaster like this, we say this is not just the right time to discuss all this. But then once the relief and rescue operations are over, all the issues, related issues, are put at the back of the mind. So the question is, when do you act on it? Now, there are several issues which arise, Simi, with the discussion we've been hearing and reading. One is that, you know, the state government has to wake up. There has to be a there has to be a flood forecast center. Is it not imperative on the part of the state government, if there is no initiative from the center, they should act and establish protocols so that there is a flood warning in time? Also, the encroachment issue, which Sunita was pointing out, that over last 1 century, 50% of water bodies have shrunk. So is it not alarming for the state government? So the people will rightly blame the state administration. Also, we have to see, Simi, that the Met Department also has to give precise warnings. It just can't be interaction between the western disturbances and the monsoons. They have to come up with more precise alerts so that, you know, the people can act in time. Absolutely. Absolutely. Data analysis centers should be set up. Research materials should be closely examined to ensure that these kind of tragedies don't repeatedly take place. Atir, thanks so much for those details. We'll keep coming back to you for more.